Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Good morning, Suresh sir. Good morning, Ramesh ji. Jai Shri Krishna. Good morning, Sharif. Good morning, Patel. Good morning, Varun. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Arya. एक second, guys. नहीं, just a second. Wait करो, स्मिता मैम. हरी मत करो. Okay, let's start. राइट सो गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए व्हाट आर द मेजर थिंग्स प्लीज आस्क डाउट्स कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ है व्हाई आर वी इन द शॉर्ट ट्रेड एट द फर्स्ट प्लेस व्हाई इज दिस मूवमेंट इन द बेरिश साइड कोई बता पाएगा व्हाट इज द मेजर अलोकेशन इन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द शॉर्ट एनीवन गाइस प्लीज से क्या हो सकता है मेजर रीजन एंड ये मूवमेंट कहाँ तक आएगी शॉर्ट का एनीवन एनालिसिस करेंगे वेट करो अंबिका
let the family members of YouTube also get in perspective of understanding the analysis. 2 मिनट में करेंगे. कोई बता सकता है? सुरेश सर, रमेश. नहीं, वरुण से मैं पूछूंगा. कितना जल्दी आंसर करोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे. Anyone? Why was the sudden drop in the moment? Good morning, Zaji. Question: Why is the movement coming towards down, Zaji? Movement नीचे क्यों आ? The 2.0 completion. 2.0 completion 4020 में ही हो गया था आर्या. So the completion of 2.0 was at this point itself. ये वाला जो रेंज है वहां से. वरुण तेरे को बोला था नहीं बोलना है करके, क्यों बोला? जय जी 4 आवर्स की मैपिंग भी सही है. आंसर इज करेक्ट. सो आंसर्स ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है. हाई वॉल्यूम पॉइंट, देयर वाज अ हाई कैंडल इन 1 hour. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस गाइस. बोलो, बोले तो मत बोलना प्लीज. ठीक है. इट्स अ रिक्वेस्ट. So what do we notice at this point of action? Immediately at 1 hour range, what is the major action plan? Do we see the highest volume candle? Where was the highest volume candle? The highest volume candle was in pursuance of this movement, right? So whenever there is a high volume candle coverance, the market will tend to reverse, right? That is the portfolio that you have to carry forward. From that point of action, market tend to create a point of action. Point of action कहाँ पे create किया, and why was the trade executed? The trade was executed because 15 minutes में हमारे पास S2P1 setup form हुई थी, right? At this point of action, from that action point itself, we had looked for a short trade.
right? With that short point of action, what is the TTS 2.0 allocations that we'll be looking at? This will be the swing high, this will be the swing low, this will be the retracement point. And we had shared the analysis in the group of the allocation till where the market will be coming from the same point of action. 150 से rejection लिया था, 150% से rejection supply लेके market continued with a minimality. With the minimality 150% की target कल के दिन में ही achieve हो गई थी, right? Then in today's scenario, the market is continuing because market is in what zone of action? The market is in iceberg zone. So whenever there is an iceberg zone of action created, market will steadily move in a direction till the time the next high calibration point isn't being generated. Once the high calibration point is generated, the market will tend to take a reversal with formation of a setup, right? So if you notice this movement towards the long. Why was it formed? Because of the intacts. What do we see? There was an intact pending over here, completion. There was an intact pending over here, completion. स्टडी होने के बाद यहाँ पे जाके बाइंग स्लो हुई क्योंकि मेजर लिक्विडिटी इज टुवर्ड्स द शॉर्ट. अगर लॉन्ग कंटिन्यू करना है तो मार्केट नीचे आके हर एक इंटैक्ट लेवल से एलजी पॉइंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा. जब वो कंप्लीशन होगा, that's when you will be looking for the long trade again, not prior to that. Okay, so with that formation, continuity in the movement towards the short will still sustain till the time the market doesn't give a high calibration zone creation. Okay, with that creation point, what do we notice? आज के दिन में कितना ट्रेड्स अलॉट हुए हैं? आज के दिन में सिर्फ दो ही ट्रेड्स अलॉट हुए हैं. एक 630 के कैंडल पे यहाँ पे, and और एक which is at this point which is 8:15 Indian time lanes के हिसाब से. Okay, so with this market has continued the movement. Current rejection is from आज का दिन का analysis which is demand 150%. Let's look in perspective of the allocation, how the mapping works, right? न्यूयॉर्क पीएम सेशन में क्या मूवमेंट अलॉट होता है? द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन से अलोकेशन देखा जाता है. द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ एक्शन ऑफ बाइंग व्हाट यू विल बी टेकिंग. इस पॉइंट ऑफ एक्शन से रीअलोकेट होगा with the nearest retracement point. What do we see? 100% rejection. 100% rejection के साथ three wing setup, setup 2. With the setup 2, market tend to continue in the direction. How will you map? Because this is the first come first serve which has not been taken under the consideration because it's a very small candle of 20 pips. So we'll look for the nearest next point of action which is this, right? So when we allot in this moment, what are the steps that needs to be taken under the consideration? The mapping will be taken from the top point, right? And in the continuity of this zone, which is 150%. Right? So with the 150% rejection, there was a retracement formation. Do we have a change in character form? No, there is no change in character. So what is the first allocation that we'll be looking? Conversion pay. When there is a conversion, we look for an allocation which is conversion from demand converted into supply. So where do we look for that point? Because कल के दिन में ही बात किए थे, अगर बाइंग एंड सेलिंग तरफ दोनों तरफ का वीक क्रिएट होता है, calculation will be just of the body, right? So point one, break and continue, 200% rejection. With 200% rejection, market tend to follow through the movement. The follow through of the movement was taken under the consideration of this movement, which has been currently mapped. So ये demand को reallocate करके stabilize कर. This supply will act at this point. With this break and continue, so this will be the new allocation. ये वाला जो allocation point है ये 1 hour का है तो उसके लिए थोड़ा ऊपर है, right?
In pursuance, what do we notice? Where is the market taking rejection from? Market is taking rejection from 150. But what is the market candle creating? The candle is without the wick, matlab definitely फिर से opposite, right? So any doubts in gold you guys are having? I got 4 hours mapping 200%. Okay, that is right. So this is gold. जो भी doubts है पूछ लो. Doubts नहीं है तो we'll move to BTC. So we'll hold this trade. Yes, Faizal, we are holding this trade. Good morning, Arshit. You're late. नहीं मेजर पॉइंट ऑफ अलोकेशन अरुंधति मैम का क्यों रीअलोकेशन में नहीं गए 15 मिनट्स का बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे so what is the major point of interest that we'll be following? This one, right? So in that pursuance this will be the first action point, right? Because we have a rejection point. With that rejection point the first allocation will be taken in perspective of the retracement, right? With the retracement, minimality M1 formation. With the minimality M1 formation, momentum continue, right? So ये point of interest हमें मिल रहा है in 15 minutes. But why didn't we take this as the consolidative move? The consolidative move अगर हमें इसी point of action से redevelopment दिखता तो definitely 1 hour में volume spike भी दिखता, right? So do we see the volume spike at this zone? No. Do we have? No. Retracement volume spike है, that's totally fine. जब तक reformation of the structure नहीं build होती है, we will not look for the coming point. So confirmation के हिसाब से 150 is better, right? Because we have the exact allocation. अगर minimality के साथ हम 15 minutes के allocation में बैठे रहते, तो we could have missed out on this long trade yesterday night, right? So because of that reason only, we followed 1 hour demand, not 15 minutes minimality. Okay. And all the beginners just follow supply and demand first till you guys get 100% accurate in it. Once you get 100% accurate in it, then we will move to the next formation of minimalities. This for beginners. YouTube में. हाँ करो ना, यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. 15 मिनट्स के आईडी ट्रेड के हिसाब से स्विंग हाई स्विंग लो रिट्रेसमेंट जो कि टारगेट हिट हो चुकी है. वन कल के दिन में हमने उसका 60% एग्जिट किया है ना. सेम ट्रेड. बीटीसी में भी आता है. नहीं दिखा देंगे एक बार. रुक जाओ स्मिता मैम, सॉरी अरुंधति मैम, दिखा देता हूँ.
शेयर कर दिया मैम। नहीं नहीं, वो वाला ग्रुप का मैसेज नहीं शेयर किया मैं। ये नॉर्मल का है, एलटीडी का। नहीं सॉरी, इसका वीआईपी, राइट। सो इफ यू नोटिस, व्हाट डू यू सी? एनालिसिस पे फोकस करना, किसी और चीज जाना। Just come on the analysis. Where was exactly 150% questions? Where exactly we looked for an add-on point? 4029. Where is the exact mapping? The same point. In this green candle itself, we gave you an allocation stating the market will tend to come down, right? With that, trade-off movement will be in formation of the current, right? Which is the current movement? एक second. Right? Exact rejection from the same point of 29. 250 pips इसी point of action में हो गया था, जो कि range motion है यहाँ पे। Continue intact होके फिर से break down 660 pips run है। उसमें से ID trade का 60% निकाले है and swing trade का अभी तक trade of action बना है। The same one. Okay? So that will be in the continuity of the movement. आईजी ग्रुप में एनालिसिस अपडेट इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ट्रेड में है ना 60 से। हाँ, तो दैट्स द रीजन उस ग्रुप में अपडेट नहीं हुआ। यस भाई साहब, ग्रेट जॉब। थोड़े लोगों का ट्रेड अभी भी चल रहा है, विच इज रियली अमेजिंग। कीप इट अप गाइस, नो डाउट एट ऑल। सेम बीटीसी फॉर्मेशन वाइज, व्हाट डू वी नोटिस? जो एनालिसिस शेड था उसके हिसाब से रिजेक्शन। With that rejection, what is market currently doing at this point of action? This is in a movement circumstantial of 4 hours minimally. लास्ट 4 दिन जाके देखो, क्लियर कट बोला है कि इसी पॉइंट ऑफ एक्शन तक मार्केट मूवमेंट देगी। एंड व्हाट डू वी नोटिस? द सेम मूवमेंट प्लान। रीस्ट्रक्चरेबिलिटी में फिर से और एक ड्रॉप आएगा। वॉल्यूम देखा, जहां जहां पे हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ है वहां वहां पे रिट्रेसमेंट फॉर्मेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप एट द करंट स्टेट? सप्लाई 1 remap with intact minimality M2 formation। M2 formation में 150% रिजेक्शन, 200 का पेंडिंग है। आज लेटली कंप्लीट करेगा लंदन सेशन में, ठीक है। डाउन साइड का मूवमेंट में 1 आवर की ड्राइंग क्यों ली थी, 15 मिनट्स की क्यों नहीं सर? एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, समझ नहीं आया। गुड मॉर्निंग अक्षत रेड्डी, हाउ आर यू? आईजी ग्रुप और एक ग्रुप है जहाँ पे हम आईजी अकाउंट में ट्रेड करते हैं, उसका एक ग्रुप है।
Okay. So in the continuity, what is the pursuance that you look? Come for 1 hour. What is 1 hour indicating? हर एक इंटैक्ट से रिजेक्शन ले रहा है. कब तक? जब तक एक त्रिशूल फॉर्मेशन लॉन्ग की तरफ रीबिल्ड नहीं दिखती है, तब तक हम शॉर्ट की तरफ ही रहेंगे. Am I clear? Definitely, Ramesh, I'm coming to your point. Okay. So formation is easy. How do you look in pursuance? This was the supply. Which you will be mapping it with the rejection, right? Exact 100% rejection. With that continuity in the movement, right? So to continue in the movement action plan, what is the major potential allocation that we look for? We look for an previous current range of motion, which is this one, which will get plotted at this point. M1 formation, 150 is the target. Okay, 150 is nothing but the same range of yesterday's demand. सेम ड्रैग कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना. नहीं नहीं, ड्रैग करने से अच्छा है नया लगा. Okay, am I clear here in BTC? What are the requirements to join the signal channel? We don't have any signal channel. That is the analysis shared. There are few people who are hiding in the YouTube as well, who are in that group, who are messaging as well. You can ask them. We don't provide signals. कौन सा वाला? ड्रॉप वाला 15 मिनट्स का क्यों नहीं लिए करके पूछे थे, राइट रमेश? सी 15 मिनट्स का अलोकेशन के हिसाब से फर्स्ट मैपिंग हमारा ये चाहिए, करेक्ट? जो कि ये वाला मूवमेंट है. अगर ये वाला मूवमेंट आप 15 मिनट में मैप नहीं कर पाओगे, तो आप किस लेवल पे जाओगे? स्क्रीनिंग के हिसाब से द नियरेस्ट इज 1 आवर ना. क्यों? एग्जाम्पल ले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मेरे पास ये है, उसके बाद सेकेंड सर्विंग में ये है, राइट? एंड थर्ड सर्विंग द मेजर पॉइंट इज दिस. ओके, सो इन दिस thing, what are the major things that needs to be looked at? Point one, right? With this, what do we look for? A conclusion of a movement 200. With continuity of the movement, what do we look here? Break and continue. When there is a break and continue, what do? We look for second serving, right? When the second serving comes into the play, Ramesh, so this is the allotment that we look for. Once this allotment is looked, what do we see? Again, there is a break and continue, right? Then we come to the third survey, right? So with the third serving, what do we see? Again, 100% break and continue. When there is again break and continue, what do we look for? A remapping. When there is a remapping, what do we see? 200%. तो मेरे को यहाँ पे 3 allocation लेना पड़ा, correct, Ramesh? So instead of 3 allocation, फर्स्ट सर्विंग सेकेंड सर्विंग होने के बाद मेरा नेक्स्ट अलोकेशन डायरेक्टली में जाता 1 आवर पे. क्यों 1 आवर पे जाता? क्योंकि इन 1 आवर आई विल बी हैविंग द नियरेस्ट पोर्टफोलियो पॉइंट, विच इज दिस, राइट? जो कि हमारा थर्ड सर्विंग है, वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सर्विंग है, राइट? When the first serving come into the play and map at this point, what do we notice? Break and continue. Break and continue के साथ 200% rejection. But अगर यहाँ पे notice कर रहे हो, the second red candle directly
in continuity to the wick creation, right? तो मैं यहाँ पे second serving लूंगा, तो मेरा 15 minutes का 3 servings and 1 hour का 2 servings is same, right? So instead of hustling my mind, I will always look for a preservance action plan, right? Whenever I look for a preservance action plan, what I will get? My mind is patience, my mind is calm. I'm not having a FOMO, I'm not having any kind of fear because I know 150% का target ये वाला है. If you notice, this is exactly what we had marked. अगर ये red mapping है 150% के हिसाब से चले, this is 1 hour 150%, right? Because of that one reason only, we had looked for a perpetual movement. परपेचुअल मूवमेंट कब डेवलप होता है? जब 15 मिनट में आपको 4 अलोकेशन चाहिए, वो आपको 1 आवर में 2 अलोकेशन में दे देगा. ठीक है? Am I clear here? रमेश, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? Hey Sudhir, after a very long time, how are you? Hi Varun, wow, who is here? Long time no see. Second service, what is second service, Eric? Whenever a demand or supply is not taken under the consideration of the first service. For an example, whenever there is an action plan which is taken from the first conversion of demand to demand or supply to supply, and it gives a break of 100% and gives a break in continuity of 200%, then we select the point 2 allocation, which is of second serving of the demand. So in this case, this is demand 1, demand. This 200% got completed, so we'll take the second serving, which is the bigger version of the current. With that action plan, in the same scenario, if there is a continuity in the break of a supply of serving 1, then we look for serving 2. Got it, sir. Thank you so much. No worries. Sir, will you please explain the supply logic before the reverse? कल के दिन में ही एक्सप्लेन कर दिया था ना, कल का रिवाइंड करके चेक कर लो, ये तो सुबह का ही लेवल्स था एनालिसिस. This levels were shared in the morning itself. Why the reversal was from this point? Because exactly this is the supply which played a major role, right? इस मैपिंग को डबल करो बिकॉज 100% के नीचे से रिजेक्शन लिया है, which is minimality M2. With minimality M2 there was a formation of 200% target confirmed. So उसके वजह से ही मोमेंट ऊपर गया था. ये जो रिजेक्शन दिखा था ना, ये रिजेक्शन लिक्विडिटी ग्रैप के लिए थी. अगर कल के स्ट्रीम जाके खोल के देखोगे, this point of action we had clearly said you will see one rejection till the LG point. With the LG point you will be looking for a long for M2 target. वही हुआ कल. उसके बाद the formation of the reversal point through the high volume range. Still alive, struggle continues. Hi Nitesh, I am good. Hope you're doing great. Can see you guys rocking as always. Hey Sudhir, thank you so much, man. I'm doing good. Thank you. Hope you got the point, Eric, and hope you got the point, Arya. You guys are doing a fabulous job. Keep learning. You will definitely reach the point where you guys are looking to reach.
Got it. Thank you. Sometimes I get confused because I find myself mapping every point. You don't have to map every point. सर स्विंग को पहचानने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए? किस हिसाब से पूछ रहे हो अच्छा? चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से पूछ रहे हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहे हो, राइट? सो चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से पूछ रहे हो तो अच्छा जी, रीड द चैप्टर ऑफ रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीटीएस 2.0, जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैपिंग होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड का जो चैप्टर है उसे फॉलो कीजिए। उसके साथ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रहता है ना, उसको एनालाइज करने के लिए वॉल्यूम को कंबाइन कीजिए। This three chapters will get you to one directional movement to allocate and be in the moment. ठीक है अच्छा जी? You started trading, Sudhir, if you're there in the stream. ओके, तीनों चैप्टर को साथ में कंबाइन कीजिए एंड बैक टेस्ट करना शुरू कीजिए, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. Sir, if we had a normal demand movement at the supply 200%, then we could still be looking for long, but just because we got volume spike, we are looking to stay in reversal. No, it's never looked in that perspective, Arya. Whenever there is a 200% rejection, there is a setup formation, right? So whenever that setup is formed and you have got a 99% accurate reversal volume spike, understand that market will never continue from that point to the longer side. It will definitely trap all the buyers out. Okay, it's just not the random thing, it is the only thing. I took break, was completely away for 3 months though watching your videos. Great, great. I saw your DP, amazing DP, man. You got it photo shoot? You got it photo shoot means portfolio create कराया या ये? You got the photo shoot done or tutorial? Okay. Great, great, guys. Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask.
अल्टीमेट लेजेंड मेंबर्स कल एक सेशन होगी. ओके, तो जितने भी लोग उसमें हैं, team will share across you the Zoom link for the webinars. Can join. It will be in the first half. किसी को कोई डाउट नहीं आता है क्या? गुड मॉर्निंग अगस्त्य. कल की हैंगओवर आज की हैंगओवर के साथ मिलाओ मत. गुड मॉर्निंग अश्विनी. 4 मिनट है अभी भी. इतना जल्दी क्यों ज्वाइन किए? थोड़े लोग हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं, थोड़े लोग हैं जो जल्दी ज्वाइन करते हैं. Got promotion this week, still not happy. I got promotion this week. Congratulations, happy for you, Sudhir. Still not happy. I want financial freedom. You people always motivate me, but still not able to do progress. It's very simple, Sudhir. Once you do this, then you just have to cross the L. Then you will reach the destination where you want to be. Okay. Anyways, I am happy for you that you got a promotion. If you are not happy, also, that's totally fine, but I am happy. बूंद बूंद से सागर. भाई साहब. Right, Sudhir? So still confusion. Last 2 bars market गिरा था, वो इंटैक्ट लेवल टच करके लॉन्ग में ही चला गया. कल मार्केट गिरा तो गिरता ही चला गया. दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज गाइड. एक में जहां पे मार्केट 2 कैंडल गिरा, वहां पे वॉल्यूम नहीं था, वहां पे आइसबर्ग जोन था. राइट. कल के दिन में जो वॉल्यूम गिरता गया,
सॉरी, कल के दिन में जो मार्केट गिरता गया बिकॉज वॉल्यूम में स्पाइक था, रिवर्सल इंडिकेशन दिया था. थैंक्स नितेश, ऑलवेज रेस्पेक्ट फॉर यू, the way you explain everything on stream. Thank you so much. Thank you so much everyone for watching this stream. And thank you, Sudarshan. He is also one of the early stage members of TTS. जितने भी लोग बुक पढ़ के मैनुअल की तरह यूज कर रहे हैं, कोई भी डाउट है पूछ लो, अगर स्ट्रीम में कोई है तो. नहीं, अच्युत जी का हो गया. अच्युत asked, who else has the book? जय जी, एमएनपी सेशंस के हिसाब से कुछ डाउट्स है तो पूछ लो. वरुण तो हमेशा यहाँ पे ही रहता है तो उसका कोई पूछना नहीं. Rest all is YouTube members, that's fine. Nice to meet you, Sudhir. Me and Varun were there when you started YouTube streaming. Yes, so true. Yep, I remember Sensex 10x. Oh geez, Banknifty 15x, Nifty 30x. Sir, I'm completely new for trading. मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको समझने में. कोई बात नहीं है. अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है? You will reach. But understand each and every chapter before getting into the next chapter. उतना ही बोलूँगा. But it was fun. Then came BTC and gold, in which X का value सर ने zero कर दिया.
Sir, MNP sessions के most of the doubts got cleared. Your live session helped me clear most of the doubts, even ones which I didn't have. Okay. Okay, Zaidi. Then now focus on executions. Yeah, always watching Varun smashing like 10x, 15x, it was fun. उसमें और एक मेंबर है आपके साथ अरुंधति मैम. Negative 50 lakhs to positive current valuation. Numbers नहीं बता सकता, sorry. नेगेटिव का बताया क्योंकि वो नंबर वाज अ पास्ट उसके लिए. चिल मारो. सर सर आपका यूट्यूब लाइव पर आना मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद की तरह. सीख लो. कोई भगवान आपको पैसा भी ऐसा छापने देगा ना, यू विल स्टार्ट प्रिंटिंग मनी. उतना ही बोलूँ. गैस कल के दिन में और एक हो चुके हैं मिलीनियर. राइट. सो वेरी फ्यू स्पॉट्स. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, टीटीएस लाइव स्ट्रीमिंग विल बी क्लोज्ड. I was hearing Arundhati ma'am's name also. Yeah. कल से इधर एक टैब ओपन होगा. काउंटडाउन के जैसे रहेगा. अंबिका बीटीसी में ट्रेलिंग करो यार. एमटीएसएल पॉइंट ही नहीं रखा है. क्यों? एमटीएसएल यहाँ पे रखो, सिस्टम ट्रेलिंग यहाँ पे रखो. ओके. 200% जहाँ पे है वहाँ पे एमटीएसएल सॉरी सिस्टम ट्रेलिंग रखना. 150% से थोड़ा नीचे में एमटीएसएल लेके चलो. Stream will be there for next 5 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. ये जैसे ऊपर जा रहा है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल लॉन्ग की तरफ. 1 आवर में नोटिस करो विक्की नहीं है इस कैंडल में. इंक टैग टच करके फट करके आएगा नीचे. एंड वॉल्यूम इज इन आइसबर्ग जोन, सो इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट मूवमेंट. When you see the mom, you feel the beauty of the God. When you see the sun, you feel the power of the God. But when you see yourself in the mirror, you see the beautiful creation created by the God. So don't let it go to the waste. Wherever you are, just make sure, take one more step ahead from the comfort zone and prove that you were one of the beautiful creations.
Nothing else I will say. फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मोटिवेशन सिर्फ एक लाइनर में होता है। उतना काफी है यार 24 आवर्स चलाने के लिए। एक एक घंटा दो दो घंटा नहीं। योर मोटिवेशन इज विद इन यू, यू हैव टू फाइंड इट। जैद जी आप क्या बोल रहे थे कल? व्हेन गॉड हैज गिवन द ब्यूटीफुल फेस व्हाई डू पीपल लाफ फ्रॉम द एस? वो मैं स्ट्रीम क्लोज होके एमएनपी सेशन में जब था तब पढ़ रहा था आपका कमेंट। इतना हंसाओ ना मैं। कल वाला भी बहुत खतरनाक था, आई कमेंटेड ऑल्सो। सुरेश जी वो अल्टीमेट लेजेंड्स के लिए। कल वाला कौन सा था? Some people see the skies, sorry, some people see the depths before and the skies later. Some people see the skies before and the depth later. वो वाला ना आर्या। That was good. सर आप मोटिवेशन की भी चलती फिरती बुक है। नहीं, चलती फिरती इंसान है। Okay. So all the new members in the stream, I could only say you one thing. It's not about which concept, which strategy, or anyone which you follow. It's about, did you back test it for 6 months? Did you forward test it for 6 months? Did you do 1 month of live analysis? Then did you get a small capital and did you compound with that strategy? If not, do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, come with a smaller capital, build it, compound it. While compounding, follow one thing, that is risk to reward. How will you do it? You can do it only once you set your mindset. Read books, meditate so that your mind is calm. With that, remove fear, greed, and FOMO from the life so that waiting is the only key in this business. Once you learn to wait, you will start to make the money what you are looking for. This is Nitesh signing off. Happy weekend. मिलते हैं Monday. तब तक के लिए take care. Bye bye. धन्यवाद.